Hello friends, I am from Dreamcatcher. Welcome to my channel Dreamcatcher. I am here going to present you previous year papers of climatology of semester 6 Banaras Hindu University. Paper code name is GRB 601. Now I am going to introduce you short answers. First one is scope of climatology. Climatology is basically the branch of atmospheric science that deals with systematic and regional studies of atmospheric conditions, that is weather and climate. Moving forward, before moving forward, we have to know about is what is weather and what is climate. Weather is the short term in short term perspective, and climate in long term perspective. What is weather? Weather is the sum total of atmospheric condition in terms of temperature, pressure, wind, moisture, cloudiness, precipitation and visibility of a particular place at any given time. Precipitation when the water droplets came to the land from the wind, that is called as precipitation. Climate, what is climate? Climate is the study of aggregate weather conditions of any region in long term perspectives. Crisfield, Crisfield says that climatology is the science which studies the nature of climate, the causes and interpretation of its spatial variation and its association with the elements of natural elements and human activities. This definition is given by Crisfield, and Oliver and Hedor in 2003 says that it is a science, really an applied science, whose methods are strictly meteorological, but whose aims and results are geographical. This definition is given by Oliver and Hedor. And other definition of it may also be defined as the study of long-term weather conditions of a place or an area of varying spatial scales over long period of time, of frequent and infrequent weather phenomenon, systematic study of climate and its distribution on the earth's surface, both horizontally and vertically, effects in human economic activities on different components of atmosphere leading to weather and climate changes, and effects of weather and climate on man and his activities in particular, and other flora and fauna in general. What are the natures of climatology? Climatology tries to study the identification, demarcation and distribution of different types of climates. Climatology tries to study the identification, this is, sorry for misprinted, my content team write it twice. Mode of origin of different types of climate, and causes and process responsible for climatic variations both horizontally and vertically, different elements of weather and climate, interaction of weather and climate with human society, how weather and climate interact with human society, this impact of climate on human health and activities including physiological and psychological aspects. What are the scopes of climatology? The subject matter of climatology may be described through its various branches. First one is physical and dynamic climatology, regional climatology, and applied climatology. This is the second one and third one. What is physical climatology? Physical climatology deals with the study of elements of weather, namely insolation, temperature, air pressure, wind, evaporation, humidity, precipitation, fogs, visibility, etc. And it is the physical climatology is the combination of these elements that form different climates. Physical climatology process is the processes that forms various combinations of these weather elements, like exchange of heat, humidity, interaction of atmosphere and earth surfaces. In other words, it studies systematic description and analysis of energy balance of atmosphere and earth, atmospheric temperature, humidity and precipitation, atmospheric motions and air circulation, air masses, atmospheric extreme event, atmospheric disturbances, droughts, sorry for disturbance guys, droughts, floods, etc. And second one is the regional climatology. Regional climatology, regional climatology is the spatial variation in the combination of elements of weather and climatic cause different types of climates in different region of the world, and the size of region over which similar climatic condition of observed varies from a micro area to macro area, a crop field area to the a continent. This is the phenomenon of regional climatology. Thus, regional climatology studies the differences in climatic conditions of the areal units, having different spatial scales like microclimates, local climates, mesoclimates, and macroclimates. What is the microclimate? Microclimate varies from 1 meter to 100 meter. 100 meter horizontally, and from ground surface to 100 meter vertically, यहाँ तक 100 मीटर, that is called microclimate.
It may represent the climate of a single crop field, single household area around a single tree. Data related to such climates are collected from ground, and it enables the investigator to generalize variation of microclimatological process operating over varying ground surfaces and their impact on human beings. Thus, it may included as part of applied climatology. It is the part of applied climatology. And next one is local climate. Local climate Local climate, its horizontal extension is from 100 meter to 1000 meter. 100 meter से 1000 meter, and vertical surface up to 1000 meter से, from ground surface से 1000 meter. Hmm. What are the it is the types of local climate and mesoclimates from 100 meters to 20 kilometers in horizontal way, and 20 ground surface is 6 kilometer in atmosphere. It may represent the mesoclimates, and it also represent the Ganga Delta, Konkan coastal plains, Middle Ganga plain, Sundarbans, Reva plateau, etc. What is microclimate? It is also known as geoclimate or geographical climate. Microclimate is also known as geoclimate or geographical climate. Its horizontal distance is from more than 20 किलोमीटर to several hundred किलोमीटर. माइक्रोक्लाइमेट 20 किलोमीटर से लेके हॉरिजेंटली कई 100 किलोमीटर में फैला होता है, एंड वर्टिकल एक्सटेंड फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू मोर देन 6 किलोमीटर. इट मे रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री और ए कॉन्टिनेंट लाइक यूएसए, चाइना, रसिया, इंडिया, एक्सेट्रा. It may be divided into descriptive climatology, study of climatic characteristics of ground surfaces, and synoptic climatology, analysis of dominant patterns of atmospheric circulation based on approach of analysis. Now we are moving for applied climatology. It deals with the climatic controls of human activities. How climate controls human activities? What are the impacts of climates on human activities? What are the geographical phenomena convert human activities? Application of climatic principles and knowledge to solve various problems faced by human society. How does man modify climate by introducing advertent and inadvertent changes in physical environment? Weather modification by man, and that is cloud seeding and induced precipitation. Human biometeorology, reaction of human bodies to change in atmospheric environment. Second one is satellite climatology. It deals with the climate data obtained from satellite. It is with the climate data obtained from satellite, that is the known as satellite climatology. Third one is the climate and human health. Climate change affects the food we eat. Climate change affects the food we eat, the air we breathe, the water we drink, and the places that provide us with shelter. Climate change can also impact people's health and well-being by altering the frequency of intensity of extreme weather events and spread of certain pests and diseases. Uh, now pollution is affected our climates, and its result is into we got several diseases such as climate change significantly impact human health, such as food and waterborne diseases, respiratory illnesses. Extreme weather events cause worsening of extreme weather events, increases injuries, displacement, and mental health issues. Vector-borne diseases, heat related illnesses. Rising temperature day by day contribute to heat related illnesses such as heat stroke, dehydration, etc. Consensus among health professionals. Globally, health professionals agree that climate change is real, human caused, and exacerbates health problems. What are the characteristics of a stratosphere? Stratospheres basically, now we are showing to you these pictures. Troposphere is the first. Second one is the stratosphere. इसमें ओजोन लेयर भी पाया जाता है. Third one mesosphere and thermosphere. Here this graph shows that temperature decreases from going upwards, and it is up to from 0 to 10 kilometers, and stratosphere from 10 kilometers to 50 kilometers. It is spread from 10 kilometer to 50 kilometers. This is known as tropopause. This is known as stratopause. This line is known as tropopause. This is stratopause. And टेम्परेचर यहाँ से फिर से बढ़ता जाता है, फिर देन डिक्रीजेज. मिसोस्फीयर में डिक्रीज होता है, उसके बाद से लगातार टेम्परेचर हाइट के अनुसार बढ़ता चला जाता है. स्ट्रेटोस्फीयर के हमने तीन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. एल्टीट्यूड रेंज फ्रॉम 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ, एब्सेंस ऑफ क्लाउड. इट बेसिकली लैक्स क्लाउड्स और सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस. This formed in troposphere, not in stratosphere. Stability: unlike the turbulent troposphere, the stratosphere is calm and stable, and no weather events occurred in stratosphere. Temperature inversion. Now we are going to next topic, temperature inversion.
Temperature inversion is basically if we see that from 0 1 in troposphere 165 meters. If we are moving forward, so from 0 to 165 meters, we see that temperature decreasing 1 degree Celsius. From 165 to second 165, temperature decreases to 2 degrees Celsius. But it is the normal lapse rate. This is known as normal lapse rate, that temperature usually decreases with increases in altitude. जैसे जैसे हमारा altitude बढ़ते जाता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होते जाता है. लेकिन यदि इसके ठीक विपरीत जो घटना होती है या जो ऑकेजन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन्स बोलते हैं. जैसे कि आप देखेंगे तो सिचुएशन गेट रिवर्स एंड टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट रादर देन डिक्रीजिंग. टेम्परेचर यदि हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर घटने की बजाय क्या होता है? बढ़ता चला जाता है. आप इस फिगर्स में देख सकते हैं. या वार्मर एयर है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कूलर एयर हो रहा है, और ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर हो जा रहा है. लेकिन इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे काम करता है, आप यह देखेंगे तो एक लॉन्ग फेज में आप देखेंगे तो जैसे ये होती है पोलर एरियाज में. बेसिकली जब हम एक लंबे ठंडे प्रदेशों से हमारी जो वार्म एयर टकराती है, तो धीरे धीरे उसके नीचे वाले सरफेस ठंडे हो जाते हैं, ऊपर वाले गर्म ही रहते हैं. डैट इज बेसिकली फाउंड इन टेम्परेचर इन्वर्जन. What are the temperature inversion? It is the reversal of the normal behavior of temperature. Basically, it is the reverse of normal temperature, normal lapse rate. Under this meteorological phenomena of a layer, a warm air lies over the cold air layer. A warm air lies over the cold air layer. It is caused in static atmospheric condition, while sometimes it occurs due to horizontal or vertical movement of air. Temperature inversion is usually of short duration, but quite some nonetheless. It is the shorter duration. Temperature inversion is caused in shorter duration. Favorable condition of temperature inversion such as long winter nights, cloudless and clear sky, dry air near the ground surface, slow movements of air, snow covered ground surface. And the next question can be asked in what are the types of temperature inversion. Temperature inversion occurs in several conditions ranging from ground surface to great heats. Thus were several non-advectional एंड सब्सिडेंस इन्वर्जन ऑन. रेडिएशनल इन्वर्जन सच एज द सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर. डेवलप्स व्हेन एयर इज कूल्ड बाय कांटेक्ट विथ ए कोल्डर सरफेस अंटिल इट बिकम्स कूलर देन द ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर. सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन ए वाइड स्प्रेड लेयर ऑफ एयर डिसेंड्स, इट इज कंप्रेस्ड एंड हीटेड बाय द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एज ए रिजल्ट द लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. द एयर एट हायर एल्टीट्यूड्स बिकम वार्मर देन एट लोअर एल्टीट्यूड्स, producing a temperature inversion. This type of temperature inversion is called subsidence inversion. It is very common over the northern continents in winter, dry atmosphere, and over the subtropical oceans. These regions generally have subsidizing air because they are located under large high pressure centers. It is also called upper surface temperature inversion because it takes place in upper parts of the atmosphere. Advectional valley inversion in intramontane valley. In high mountains or deep valleys, sometimes the temperature of the lower layers of air increases instead of decreasing with elevation along a sloping surface. Here the surface radiates heat back to space rapidly and cools down at a faster rate than the upper layers. As a result, the lower cold layers get condensed and become heavy. The sloping surface underneath makes them move towards the bottom, where the cold layer settles down as a ocean of low temperature, while the upper layers are relatively warmer. This condition opposite to normal vertical distribution of temperature is known as temperature inversion. Frontal और cyclonic inversion क्या होता है? When the warm and cold fronts, this is मान लीजिए आप एक warm fronts है, इधर से एक कोल्ड फ्रंट्स आ रहा है. मिड देन द वार्म फ्रंट राइजेज अप. ये वार्म फ्रंट गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा. अभी इधर का ठंडा हो जाएगा यार, इधर का गर्म हो जाएगा यार. दैट इज नोन एज फ्रंटल साइक्लोनिक इन्वर्जन. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटल इन्वर्जन. इट हैज़ कंसिडरेबली स्लोप वेयर इज ऐसे स्लोप यहाँ पे एक फ्रंट बन जाएगा. वेयर इज द अदर इन्वर्जन्स आर नियरली हॉरिजॉन्टल. इट ऑफन टेक्स प्लेस इन द temperate zone and causes cyclonic condition which result in the precipitation in different forms. What are the effects of temperature inversion? Dust particles hanging in the air stops the movements of air, less rainfall, lower visibility, thunderstorms and tornadoes. And second question is describe the major determinants which control the distribution of insolation on the earth surface. मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं जो कंट्रोल करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को अर्थ सरफेस पे? तो द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ्स.
द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो एनर्जी हमको सन से मिलती है, अर्थ रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। विच इन शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं? उसको इंसोलेशन बोलते हैं। द सोलर आउटपुट received at the top of the atmosphere varies slightly in a year due to the variation in the distance between the earth and the sun. However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of land and sea and atmospheric circulation. This variation in the solar output does not have a great effect on daily weather changes on the surface of the earth. Variability of insolation at the surface of the earth are: first one is the rotation of the earth on its axis। अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन होने की वजह से। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो 66 डिग्री पे ऐसे घुमा हुआ है। सन रेज, द लेंथ ऑफ द डे, the transparency of the atmosphere, rotation of the earth on its axis 66 degree with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitudes. The angle inclination of the sun's rays. Second factor determines the amount of insolation received is the angle of inclination of the of the rays. Sorry, this depends on the latitude of a place. The higher the latitude, यहाँ से ऊपर जाते समय लेटीट्यूड बढ़ता चला जाता है। हायर द लेटीट्यूड, the less is the angle they make with surface of the earth than the slant rays. If more area is covered, the area gets distributed and the net energy received per unit area decreases. Moreover, the slant rays are required to pass through a greater depth of the atmosphere resulting in more absorption, scattering and diffusion. What are the lengths of the day? Length of the day, transparency of the atmosphere. Summary of sensor in table. We can summarize the sensor in a table. Distribution of insolation, incoming radiations on Earth's surface is influenced by several major determinants. First one is latitude. Insolation decreases from the equator towards the poles due to the curvature of the Earth's surface. Earth ये अर्थ हो गया। यहाँ से सन रेज आ रही हैं, तो ये स्लैंट रेज होने की वजह से, ये थोड़ा सा कर्व जैसे होने की वजह से इधर रेज नहीं अच्छे से पहुँच पाती हैं और यहाँ पे सन हीट ज़्यादा होता है, इसलिए लेटीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारा सोलर रेडिएशन डाउन होता जाता है। अफेक्टिंग द एंगल एट विच सनलाइट स्ट्राइक्स। सीजनल वेरिएशंस, रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से हमारा सीजन चेंज जो होता है रहता है। डेट कॉजेज सीजनल वेरिएशंस। एल्टीट्यूड, यदि हम ऊपर हाइयर एल्टीट्यूड रिसीव मोर इंटेंस इंसोलेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक एटेंचुएशन। दिस इज वाई माउंटेन्स रीजन्स ऑफन एक्सपीरियंस ग्रेटर सोलर रेडिएशंस। आप ऊपर देखेंगे ये माउंटेन्स हैं, ऐसे यहाँ पे सन है, तो सन के पास ये कौन है? ये है। इसके नीचे वेदर्स होते हैं, तो वेदर हीट एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं सरफेस तक आने पर। जबकि हमारे ये माउंटेन्स हो गए हैं, हायर एल्टीट्यूड्स गेट्स मोर हीट एनर्जी देन लोअर एल्टीट्यूड्स। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, फैक्टर्स सच एज क्लाउड कवर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन कैन attenuate of reflect insulation altering its distribution on the earth surface. Surface characteristics क्या होते हैं? Surface albedo or reflectively influences the absorption and reflection of insulation. Surface with higher albedo like snow or ice reflect more sunlight compared to darker surfaces affecting insulation and distribution. Explain the process of heating and cooling of the atmosphere. उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस एंड दिस स्टेज आर रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। आपने ये बहुत ही पहले अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा इन सब के बारे में। रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है। रेडिएशन इज अ साइकिल बाय विच सन बेस्ड एनर्जी अराइव्स एट द अर्थ एंड द अर्थ लूसेस एनर्जी टू स्पेस जनरेटेड बाय द कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखिए, मान लीजिए सन से रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन आया, ये पृथ्वी पर पड़ा, पृथ्वी फिर से इसको अपनी एनर्जी, अपनी कुछ एनर्जी को, हीट एनर्जी को लेगी, फिर उसको वापस से सन की तरफ या आसमान की तरफ छोड़ देगी। फिर इसको कार्बन ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस जो मतलब गैसेज जो होती हैं, फिर इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी पृथ्वी पे, जिससे हमारा दिन प्रतिदिन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है। Atmosphere do not get its temperature directly by the short waves of the sun, but through the long waves of the earth. The atmosphere is transparent to the solar radiation, which is the form of short waves. It allows them to reach the earth. The four processes of heating and cooling of atmosphere are radiation, conduction, convection, and advection. This is the process of radiation. This is the process of conduction. The ground heats the air, and this is the warm air rises convection. This is the process of
convection. We can explore it. What is radiation, conduction, convection, and advection. You can see that radiation is the process of heating an object by the transmission of heat waves. The earth's surface gets temperature through solar radiation. It radiates energy in the form of long waves which is absorbed by the atmosphere. Conduction क्या होता है? Transfer of heat by molecular activity is known as conduction. The atmospheric layer closer to the surface gets heat in this process with contact. What is convection? Transfer of heat through the movement of mass is called convection. The lower layer of the atmosphere gets temperature and become lighter, so it moves upwards. The dense air in the upper layer being dense descends downwards, वो नीचे आने लगेंगे. With the cyclic movements, temperature is distributed in the lower layers of the atmosphere. What is advections? Temperature is also transferred by large scale movement of air. When warm air moves up cold regions, temperature of the air increases and is contrast cold reduced heat. This phenomenon is called as advection. Explain the various forces which determine the velocity and direction of wind near the surface. What are the various forces which determine the velocity and direction of wind near the surface? The velocity and direction of wind near the Earth's surface are determined by several interacting forces. Here is breakdown of the key factor. First one is Coriolis effect. Second one is pressure gradients. Third one is temperature differences. Fourth one is topography terrain. Fifth one is Earth's rotation curvature. Sixth one is jet streams. Seventh one is local and synoptic scale forcing. You can see, you can show what are the Coriolis forces. In northwards it is movements in right direction, in left direction. ये जाना चाहिए सीधे, लेकिन रोटेशन की वजह से पृथ्वी आगे चली जाती है, इधर टर्न हो जाता है. इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन इधर टर्न हो जाता है. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट. इसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट्स? प्रेशर ग्रेडियंट्स आर डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर्स अक्रॉस ए गिवन एरिया. व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एरिया, एयर रशेस टू फिल इन द स्पेस. ये देखिए, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है. यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है. पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है, फिर हाई प्रेशर बेल्ट होता है. तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं. ये इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, ये इधर घूम जाएगा, इस तरीके से. Temperature differences. When warm air rises and cool air sinks, a principle known as convection. You studied just before. When warm air encounters a cooler area, it rises, creating an upward pressure gradient that can drive wind. Conversely, when cool air moves over warm air, ये cool air है, ये warm air है. When cool air moves over warm air or heat, it heats up and rises, क्रिएटिंग ए लो प्रेशर जोन डेट ड्रॉज इन मोर इंटेंसिफाइड. अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यहाँ से ऊपर चल जाएगा, ये लड़ गया, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर आ जाएगा. टोपोग्राफी टेरेन. द शेप ऑफ द लैंड अफेक्ट्स विंड पैटर्न्स. माउंटेन्स एंड हिल्स कैन ब्लॉक और रीडायरेक्ट विंड फ्लोज, कॉजिंग टर्बुलेंस एंड क्रिएटिंग लोकलाइज्ड विंड्स. Patterns like down slope winds or sea breezes. The interaction of winds with the terrain is also responsible for the development of fronts, boundaries between air masses of different temperatures and pressure. हम अभी आगे फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ रोटेशन एंड कर्वेचर की वजह से, जैसे इसका काजेज होता है कोरियोलिस इफेक्ट विच इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, लोकल एंड सिनॉप्टिक स्केल फोर्सिंग. Describe the modern theories of the origin and mechanism of मानसून विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. इंडिया के स्पेशल रेफरेंस के साथ मॉडर्न थियरीज आया ओरिजिन एंड मैकेनिज्म मानसून का हम पढ़ेंगे. मानसून क्या होता है? मानसून इज अ सीजनल विंड सिस्टम दैट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू पार्ट्स ऑफ एशिया, Africa and South America. In India, the monsoon plays a crucial role in the country climate and agriculture. Here is an overview of modern theories on the origin and mechanism of the Indian monsoon. Heating of land, ocean remains relatively cool. Westerly jet theory, low level jet theory, and oceanic atmospheric interaction theory. Land sea breeze circulation theory. Now the sixth question is define air mass. Air mass क्या होता है and give a detailed account of its modification and climate classification. Air mass is a large volume of air that has similar temperature. एक जैसा उनका टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया. एयर मासेस एक बड़े से जियोग्राफिकल एरिया पे उनका टेम्परेचर समान होता है, ह्यूमिडिटी एक जैसी होती है, खूब ज़्यादा वॉल्यूम होता है एयर का. Air masses form when a region of the atmosphere is dominated by a single type of weather from an extended period, allowing the air to become uniform in its properties. They play a crucial role in determining weather patterns and can be modified as they move across different terrain and encounter other air masses.
यू कैन ड्रा द डायग्राम्स इन योर एग्जामिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस कैसे बनते हैं, इसके तीन कारण हैं। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, कूलिंग ओवर वाटर, एडियाबेटिक कोल्ड। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग मान लीजिए माउंटेन्स है, ये माउंटेन है। वह वेन एयर इज फोर्स टू राइज ओवर, वेन एयर यहाँ से राइज करेगा ओवर माउंटेन्स, इट कूल्स एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग एन एयर मास, ये ठंडा होगा और क्या बना लेगा, एक एयर मास बना लेगा। फिर कूलिंग ओवर वाटर, जब मान लीजिए वाटर है, इस पे एयर मासेस चल रही हैं, एक लंबे समय तक चलने के बाद सब का टेम्परेचर एक जैसा होता है, और लार्ज ओवर वाटर बॉडी इट कूल्स एंड बिकम्स मोर ह्यूमिड फॉर्मिंग एन एयर मास। What is adiabatic cooling? As air rises, it expands and cools due to and decreasing air pressure. This can also lead to the formation of air masses. What are the modification of air masses? As air masses move across the Earth's surface, they can be modified by heating and cooling, orographic influence, friction and convection. Classification of air mass. Temperature classification, warm या tropical, originate near the equator के पास, यहाँ यहाँ पे होते हैं इक्वेटर के पास। हैविंग टेम्परेचर एबव 20, इनका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एबव होता है। एंड ब्रिंग वार्म मॉइस्ट एयर, कूल टेम्परेट जो एरिया में, फार्मिंग ओवर कूलर ओशियन वाटर्स और लैंड। हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड ब्रिंग कूलर एंड ड्रायर एरिया एयर सॉरी। कोल्ड या पोलर एरिया ओरिजिनेट नियर द पोल्स, हैविंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड ब्रिंग कोल्ड एंड ड्राई एयर। मॉइस्चर क्लासिफिकेशन, मेरी टाइम मॉइस्ट, farm over warm or cold water, often cloudy and bring precipitation. Continental dry, air masses plays a crucial role. You can write it way forward. Explain the source regions, types and weather associated with fronts. Source regions, types of fronts and weather associated with fronts. A front is a boundary between two air masses. मान लीजिए एक एयर मास है, एक ये एयर मास है, ये जब आपस में टकराएंगे, ये जो इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट्स बोलते हैं। ए फ्रंट इज अ बाउंड्री between two air masses of different temperatures and densities. When these air masses meet, they can cause changes in pressure, temperature and humidity that lead to the formation of clouds and precipitation. Fronts plays a key role in determining weather patterns. Here is an overview of fronts including their source, region, types and associated weather. You can see that this is the cold air, cumulonimbus clouds and stratus clouds, cold air. ये क्या है, फ्रंट्स है। ये कोल्ड फ्रंट्स, इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट्स इसको बोलेंगे वार्म फ्रंट्स। मॉडरेट टू लाइट्स ओवर, हल्की बारिश होगी, यहाँ पे हैवी बारिश होगी। सोर्सेस रीजन्स, फ्रंट्स टर्न इन थ्री मेजर सोर्सेस रीजन्स, ओशियन सरफेसेस, लैंड सरफेसेस एंड माउंटेन सरफेसेस। दैट इज ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ओवर माउंटेन्स एंड कैन क्रिएट टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स। ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, इसको कोई किसके वजह से होता है, तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के वजह से, माउंटेन्स पे जो फ्रंट्स बनते हैं उससे। लैंड सरफेसेस, एयर मासेस कैन आल्सो फॉर्म ओवर लैंड विथ वार्म और मॉइस्ट एयर मासेस फार्मिंग ओवर वार्म लैंड एंड कूल ड्राई एयर मासेस फार्मिंग ओवर कोल्ड लैंड। दीज एयर मासेस, यहाँ पे वार्म ओवर लैंड है, यहाँ पे ये कोल्ड है, इससे लड़ाई करेगा तो क्या बन जाएगा, लैंड सरफेसेस की वजह से। ओशियानिक सरफेस, वार्म और मॉइस्ट एयर मासेस फार्म ओवर वार्म ओशियन वाटर्स वाइल कूल ड्राई एयर मासेस फार्म ओवर कोल्ड ओशियन वाटर्स। These constructing air masses meet and form fronts when air flows from the ocean onto lands. Type of fronts, there are three types of fronts: warm fronts, cold fronts and stationary fronts, अभी मैंने बताया है। This when warm air masses moves into a colder region, the air masses remains warm and moist as it moves, causing gentle warming and rising, and that even often leads to cloudy rainy conditions. Cold fronts, you can read it also. Stationary fronts, weather associated with fronts, रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स। वार्म फ्रंट्स ऑफन ब्रिंग रेन एंड थंडर स्टॉर्म। वार्म फ्रंट्स क्या कारण बन जाता है, रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स का। स्ट्रॉन्ग विंड्स, कोल्ड फ्रंट्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड कूलर denser air rushes in to replace the warmer air. Dropping temperatures, turbulence and severe weather. Discuss the major cause of global warming and present a brief account of its impact on Indian climate. आप इस प्रश्न से सब लोग परिचित होंगे। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, प्रेजेंट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन दिस ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज। मैंने यह बताया कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस आ जाती हैं, फिर टेम्परेचर निकलता है ऊपर, वापस से वायु एटमॉस्फेयर में नहीं, वापस से स्पेस में नहीं जा पाता है, और ये कहाँ रह जाता है, अर्थ पे ही रह जाता है, जिससे क्या होती है, टेम्परेचर अर्थ की इंक्रीज करती रहती है।
बढ़ती रह जाती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, हियर आर द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के दो कॉजेज है, एक एंथ्रोपोजेनिक, एक है नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक बेसिकली क्या मैन मेड्स होते हैं, नेचुरल जो और सन मतलब एक तरीके से सेंस में कह सकते हैं गॉड के द्वारा। सन स्पॉट एंड सोलर साइकिल, ओशियानिक करंट, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शंस, मीटेरोइड्स, ये मुझे नहीं दिख रहा है, सॉरी दोस्त। इमिशन ऑफ सीओ, इंडस्ट्रीज, emission of greenhouse gases, increased vehicles, deforestation, chemical fertilizers। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोसफियर causing the earth to warm। the main human caused greenhouse gases are carbon dioxide, methane and nitrous oxide। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, आसान है। डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट्स। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेस in Indian climates? Temperature increases, changes in monsoon patterns, sea level rise, ocean warming and acidification, changes in diseases patterns, skin से related, mosquitoes से, disease carrying insects like mosquitoes increase the risk of vector borne diseases etc. Energy demand, higher temperature increases the demand for air conditioning, putting additional pressures for India's already strained power grid etc. Now this paper is finished guys, and thank you, and please like and subscribe my channel. Jai Hind.